हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज अबाउट नंबर्स। नंबर्स को डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रोमन नंबर्स, इस टाइप से। सबसे पहले हम चालू करते हैं नेचुरल नंबर्स से। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity. So natural numbers are only a positive numbers, number one. Natural numbers does not start from zero, it starts from one. And natural number is not a fraction or a decimal. For example, 2 divided by 3 is not a natural number. 2 and 3 separately are natural numbers, but 2 divided by 3 is not natural number. Similarly, अगर एक डेसिमल नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं 2.15, it's not a natural number because this is a decimal number. Natural numbers are are numbers which starts from 1 and goes till infinity. नेक्स्ट हम समझेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं. सो व्हेन वी include the number 0 in our natural numbers becomes a whole number. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity. This is the whole number. Whole number starts from 0. Also, similarly like a natural number, whole number डेसिमल नहीं होता, तो होल नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, 2/3 is not a whole number because it is a fraction. Similarly, say 4.25 is not a whole number, it's a decimal number. So what is important? Whole numbers start from 0, 1, 2, 3 and they are not fractional numbers and they are not decimal numbers. So आज हमने दो चीजें सीखी है, एक नेचुरल नंबर्स, एक होल नंबर्स. आज हम इतना ही करेंगे. नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर्स 0 से चालू होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं. ध्यान रखिए, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन नहीं होते और ये डेसिमल नहीं होते. थैंक यू.